what do like billionaires teach their kids about finance? Motivation is a scam. You have to be self-motivated. Because motivation comes and goes. आज motivation है, कल motivation नहीं है. मतलब काम बंद जाएगा नहीं ना. It has to continue. हमारे school और college, it prepares you to be a good employee. But financial freedom doesn't come as an employee. Every single wealthy person, maybe 99.9% of wealthy people on the planet, not wealthy because of their salaries. They are wealthy because they own something. Compounding works when you start early. The Warren Buffett का ये जो है, he started investing at 11. 11 to 55, he made his first $1 billion. 20 years from 55 to 75, 1 billion became 100 billion. So people should know at 15, 16 the power of compounding. In the sense, insurance में तो mis-selling is very common. But what are like some scams according to you which are happening in this industry in terms of mis-selling और क्या हो रहा है like industry में? Can I ask you an honest question? Do you feel a sense of pressure or some sort of tension or nervousness of continuing the legacy of the business? Hi Pratik, welcome to Conversation with Kushal. How are you doing? I'm doing great, yeah. Thanks for having me. Yeah, Looking thank you forward so to our conversation today. Yes, thank you so much for doing this. Means a lot. Can you just quickly walk us through your journey? कैसे क्या हुआ है like childhood, then what happened in your education, and now what you're doing, and then we'll take the further questions. So in terms of education, so I was always a below average student growing up, and I really thought that was great in one way because my parents left me alone. So they never had very high expectations, and they're like, "Hey, you work hard," and I worked hard. I just was very below average, and that allowed me to build a lot of interests. I even though education I wasn't good, so what happens in India is, अगर आप हमारे बहुत सारे subjects हैं, biology, math, science, English, और आपको अगर अच्छा student बनना है, तो you have to be good at everything. So I was very good at mathematics, very good at mostly math and some science, but I was bad at everything else. So I was labeled below average student, and I think because of that I pursued a lot of interests like reading. I was a very voracious reader. बहुत मैंने किताबें पढ़ी मैंने. I was and I think that habit came from my dad, who was also a very voracious reader. He obviously was a very serious reader. Read a lot of businessy, finance sort of books. I was a little bit more open, so I read fiction, non-fiction. So I grew up, really reading a lot of books. I was also, I had some physical also constraints. I had this very bad migraine. मुझे ये migraine का बहुत problem था, and I wasn't allowed to play in the sun. Imagine as a kid not being allowed to play in the sun. So luckily I got cured. And third is I also had a big stammering problem. Abhi nahi hai, but when I was growing up for the first 20-21 years, I had a very bad stammering. So I was so I think books ki duniya mein main kho jata tha. I think I really, a lot of my friends, a lot of my thoughts, a lot of my feelings, philosophies, exposure came from books and sport. What I learned was I was excellent at sport. I could pick up a sport and become more than intermediate in about, say, a couple of days. So I was very good at picking up sports. The problem is I didn't focus. मैंने बहुत सारे sports, I played a lot of sport. I became amazing at a lot of them. I competed also professionally, a little bit here and there, but I never got good at one of them. But just before that, you mentioned that you had a stammering problem, and you also basically in your early childhood, like you're also a very voracious reader, which comes from your dad itself. And I also had the opportunity to meet your dad, Mr. Motilal Oswal, last month. And one thing which I take away from that meeting is that reading is something which is very important, very critical. I also had the privilege of interviewing Ramdev ji last couple of weeks back, and he also mentioned one thing, that power of compounding, which he is like a king of as of now, like it has come from reading. What I want to ask you is that आपने और क्या क्या चीज़ें सीखी है like from your dad and from Ramdev ji, because you have the opportunity to work closely with them, and कैसे आपने आपके life में implement किया? I mean, honestly, Ramdev ji is like a second father to me. I think Ramdev ji I've seen him from age 1. So I think he's the oldest uncle I know. Apart from my own family. And I think I see him pretty often now. In fact, ये जो passive funds का idea है वो उनका ही था. उन्होंने मुझे बोला था कि ये बहुत बड़ा market है.
ये बहुत सारे customers. So I think he is the one who actually, the way I see it, he is the visionary. So he's a huge visionary. मतलब he can see 10 years ahead. जो भी उन्होंने बोला है मुझे लास्ट 5 सालों में, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज़ ट्रू. कि ये 5 साल में होने वाला है. जैसे एग्जांपल्स दे सकते वो हो? बोला है कि आपका ये नैस्डैक फंड बहुत कम छोटा था, 100-200 करोड़, ये 10,000 करोड़ का फंड होगा, देखना. देन ही सेड पैसिव फंड. अभी व्हेन वी स्टार्टेड 100 करोड़ का बिजनेस था, अभी हो गया है ऑलमोस्ट 32-33,000 करोड़. वाओ. तो वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन इंडिया. तो उन्होंने बोला कि मतलब, एंड ही सेड द वर्ड लाइक इतना हो जाएगा. up it be, and he's more positive today than he was 5 years back. so I think very visionary. He knows what's important. ने बोला कि आप ये ट्रैकिंग एरर का जो है फंडा, इसका आप थोड़ा फोकस करो, बिकॉज दिस कैन बी अ बिग डिफरेंशिएटर. और मैंने बोला ठीक है. सो हमने किया था, एंड नाउ वी हैव द लोएस्ट ट्रैकिंग एरर इन इंडिया. जो हम बात करेंगे क्या है ट्रैकिंग एरर. And because that business is scaled up, even because it's very important to be efficient. तो बहुत सारे जो small nudges है, advice है, उनको क्या है 4-5-10 साल का, he really has the foresight to predict. और अभी नहीं, पहले से ही है, बहुत सालों से. So when he says something, I take it very seriously. So I think he's a real visionary. जो भी हमने business देखा है आज, it's, I think he saw all of it. And I think it's very inspiring to meet him also, because you were very excited to, he can tell you the future. So imagine अगर आपको, if you meet a person who can tell you the future, you'll be skeptical, but if you live with him for 30 years, I'm like, what, he's right by most things. So I think it's very important. And if you ask him also, अगर now he's different in the sense that ये जो big picture thinking है, वो बहुत ही ज़्यादा है. I'll give an example. Like when we were kids, मैं उनके घर गया था डिनर के लिए. I used to go once in a while. और हमने पूछा कि Infosys obviously started 5 years before Motilal Oswal, 6 years I think. एकदम बच्चे थे. तो हमने बोला कि Infosys has grown so much, why hasn't Motilal Oswal? So, now you would expect a regular person to say things like labor arbitrage या फिर IT services, export, this, that. उन्होंने एकदम simple सी चीज़ बोली. We didn't think big enough. It's very simple. So that's the insight. Every time you meet him, you'll learn 15-20 new things, and that's why he's a great person to have around. Yeah. तो बहुत सीखी उनसे इन्वेस्टमेंट के बारे में. Insights, he is able to distill insights very quickly. अगर आप मीटिंग में भी जाओगे, मैं 10 साल पहले हमारे प्राइवेट इक्विटी बिजनेस में काम करता था, और वहाँ पे उनके साथ मीटिंग्स वाज लाइक एकदम बैठो आराम से और सुनो, बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर जो अपने स्टोरी के बारे में बताता है, उनको मतलब बात करने के लिए बहुत चीज़ है, बट ही इज़ एबल टू टेक lot of data, lot of industry, and ask very very targeted questions and very simple questions. So very insightful questions. So वो बहुत ही मतलब, I think he's able to really push people and ask very tough questions, simple questions. Questions कैसे पूछते हैं? या तो it's very मतलब it's very subjective, to be honest. कोई entrepreneur के बोलो कि आपका ये रेशियो खराब क्यों है, या फिर ये कस्टमर आपका इतने कम है. So बहुत सारा जो डेटा एनालिसिस है, बहुत सारा जो इंडस्ट्री ज्ञान है, जो उन्हें पढ़ के किया है, he is able to implement it very well. Yeah. So I've always been very curious enough, by the way, to just know this. So if I can also ask, so what do, like, let's say people who have a lot of wealth, and what do like billionaires teach their kids about financial literacy or finance in general? तो मुझे तो पता नहीं है, because I think I come from that industry. So I've had to self learn, because I've had to, and my interest was always there. जब मेरा पहला internship था, जब when I was 13-14 years old, तब मैं 12-13 साल का था. Actually नहीं, तब मैं 11 साल का था नेटवर्क चेम्बर्स में. So मेरा, I mean honestly I've grown up with this. बहुत सारा ये जो, और मैंने बुक्स भी बहुत पढ़े. My first book when I was 12 was Theory of Investment Value by John Doe Williams. When you were 12? When I was 12 or 13, I don't know what. Stupid of me. सबसे, and guess what? मैंने हजारों बुक पढ़े होंगे. The most complex book I've ever read is that book. सबसे complex book. वो 30, actually is a good book, because the first 30, it's a very old book. The first 30 pages is the only book which I've read
that explains you the how the stock market works. बहुत सारे books talking about how to invest or what are the कैसे invest करना है, which stocks, how to select stocks, how to select industries. But that's the first book that taught me how does this damn thing work. What is the mechanism, what is the thing. So I think it's a very good book. This is the first 30 pages. बहुत complex है. It's I mean, old English books tends to be books written in the 50s and 60s tend to be very complicated. But anyway, it's a very good book. The first 30 pages. So that was one of the first books I've read. So I was like, the second book I read was Phil Fisher, Common Stocks, Uncommon Profits, when I was again 15, 16 years old. And after I've read all the books, but even Benjamin Graham, a big fan of him, Warren Buffett also, उसके लेटर्स बहुत पढ़े मैंने. तो बहुत सारा जो एक्सपोजर था मेरा ये बुक्स और फाइनेंस में, एंड इट्स नॉट लाइक इट वाज फोर्स्ड. मुझे खुद को क्यूरियोसिटी थी, मुझे खुद को पढ़ना था, अंडरस्टैंड करना था. समवेयर आई वाज इंटरेस्टेड. एंड मेरे हिसाब से क्या है इन लाइफ, व्हाटएवर थिंग्स आई हैव डन इट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी. इट्स नॉट लाइक मुझे करना ही है, नहीं करना है. That is, I think motivation is not something which can be relied upon. मेरे हिसाब से motivation is a scam. You have to be self-motivated and you have to do it out of something that's pushing you. Because motivation comes and goes. आज मोटिवेशन है, कल मोटिवेशन नहीं है, मतलब काम बंद जाएगा नहीं ना. इट हैज़ टू कंटिन्यू. सो आई थिंक नेचुरल क्यूरियोसिटी था मुझे ये सब चीज़ में. बुक्स भी बहुत पढ़े, इन्वेस्टमेंट भी क्या, आई थिंक 14-15 ईयर्स में था तब स्टॉक्स थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया. बट एनीवे, पॉइंट बिंग इज़ दैट मुझे नेचुरल क्यूरियोसिटी था. एंड मेरे हिसाब से क्या है कि हमने देखा है कि आपका जो I mean, obviously, wealth is an important aspect, but growing up, we grew up in a very again, this is cliche, but we didn't have a lot of fancy stuff. I think बहुत ही नॉर्मल सा, मैं नॉर्मल से स्कूल में गया था, और अभी भी मतलब वी डोंट रियली स्पेंड मच एंड डू मच एंड ऑल दैट. बट पॉइंट बिंग इज ग्रोइंग अप ऑल्सो वे वेरी बेसिक वैल्यूज. आई नेवर हैड दिस थिंग दैट I come from a wealthy background and all that. I still don't have it. So I think that was good values, to be honest. Again, I wasn't so मेरे हिसाब से I think the importance of money is something which in India is very badly communicated. बहुत badly communicated. I think most people I know have a very bad relationship with money. And I think most people don't talk about money. Families don't talk about money until it becomes too late. Parents don't teach kids about money. So mere hisab se, and it's very important because money is very important for financial freedom. At least a country like India, where most people, it's very hard for generation to sort of improve. So mere hisab se, I think it is something that should be taught in school. I've been a big proponent of schools and colleges talking about money. हमने देखा है कि बहुत हमारे ये जो पूरा प्रिपरेशन है हमारे स्कूल और कॉलेज के, it prepares you to be a good employee. But financial freedom doesn't come as an employee, unfortunately. अगर आप देखते हो हर जो भी wealthy person है हमारे देश में या फिर even the world, every single wealthy person, maybe 99.9% of wealthy people on the planet, why are they wealthy? They are not wealthy because of their salaries. Salaries बढ़ता है, आपका lifestyle भी बढ़ेगा. They are wealthy because they own something. उनका कोई ownership है, stocks में है या फिर bonds में है या फिर real estate में है, gold में है, their खुद का business में है. So I think ownership is very important. And क्या होता है कि the sooner you know this is important, the better the impact will be. हमें पता है वॉरेन बफेट का ये जो है, जो ही स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट 11 एंड एट 11 years old, और 11 to 55 he made his first $1 billion. So 40, about 45-50 years it took to become $1 billion. 20 years from 55 to 75, $1 billion became $100 billion. So the point here is that compounding works not because when you start early, and that'll only happen if you educate people early on. People should know at 15, 16 the power of compounding. People just should know power of compounding because it's important. I tell everyone that आपको investment करना है, आपके बच्चों के लिए करना है, अभी का अभी करो, as early as possible. It doesn't matter if you buy the right mutual fund or the wrong mutual fund. If you start at 11 and you retire at say 65, supposedly no one retires, but if you retire at 65 versus you start at 30,
and you retire at 65, if you start at say 18, your wealth will be 250 times. Wow. 250 times. If you start at 30, your wealth will be 50 times. Okay. So you can, the compounding works very well the sooner you start. So मैं बोलता हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं कि first I'll get settled, शादी होने दो, this that. Most people start at about 30, but I would say just by starting 10 years early, you're improving your wealth, your financial freedom by about 100 times more. And this is through very basic compounding, nothing fancy. No, I think again, power of compounding reminds me back of my conversation with Ramdev ji again. So, like he was explaining me how like his flat when he bought at rupees 150 per square feet, which is now at 1,50,000 per square feet, like compounding wise, CAGR wise, it is not that much like percentage wise. But he was just telling that the power of compounding is so high that if let's say a stock is becoming 10x in 10 years, so 20 years में वो 100x हो रहा है, not 20x. Like a lot of people think that 10 साल में अगर 10 गुना बढ़ा है तो वो 20 साल में 20 गुना बढ़ेगा. हाँ, वैसा नहीं है. वैसा नहीं होता है. कंपाउंडिंग इज लाइक 10 गुना बढ़ा है तो अगले 10 साल में और 10 गुना बढ़ रहा है. सो 10 into 10 100x देन 1000x. सो ये जो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल कर्व, दैट इज समथिंग विच एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड. एंड उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि लाइक द अर्लियर यू स्टार्ट, आई मीन द बेटर इट बिकम्स, बिकॉज लेट्स से इवन इफ यू स्टार्ट एट 50,000 per month SIP and assuming a 12% per annum return rate which is there, so it will take you 9 years 4 months to reach the first 1 crore of your corpus, then the next 4 years 3 months to reach the second crore, then 3 years 8 months 2 years 8 months to reach the third crore, and then from 14th year onwards itself, like 16th year onwards itself, like it will take you less than 1 year to reach the next 1 crore. So like the graph was so exponential and I was like itna simple concept hai but people don't understand. Maybe even I honestly struggle to understand. क्या है हमारा, our minds are not designed to understand compounding. We see life in a very linear way, and we see pattern recognition, and the compounding formula doesn't work in our brain. It doesn't register. It's a biological thing. So I think the only way to understand is to put the math in front of you. And I think that's how I think most even biology works in compounding. So does evolution, all of that. So I think small effects over a long time does make a huge impact on most things that you see on a daily basis. Yeah, he also mentioned this, like it took Apple 40 years to reach the first $1 trillion in market cap, and only the next 3 years to reach the second $1 trillion, which is $2 trillion. Absolutely. Like everywhere, like even if I tell you about content creation, creator economy, there's the most popular YouTube creator in the world is Mr. Beast. Today he has 318 million subscribers. It took him 12 years to reach the first 100 million and only 445 days, which is approximately 1.5 years, to reach the next 100 million subscribers. So, I mean, compounding is applicable in everyone's life, I feel. It's not like only finance, it's not only like stocks. It's also like if you are doing something with sheer focus, wo compound hoga, kabhi na kabhi. So, that is... When equity investing, वहाँ पे there's, if you look at the compounding formula देखोगे, वहाँ पे compounding breaks when you lose money. And I'm not saying when you have a drawdown. अगर आप 100 रुपए में कुछ खरीदते हो और 60 रुपए में बेचो, that's when the compounding formula breaks. That's when you are actually screwing up your wealth over the long term. But if you invest in 100, that becomes 60, but you're holding on. It's a drawdown. It's not a locking of losses, and that goes back up. That is exactly how compounding will work for you. So it's very important that most people don't make losses or don't lock into losses. Obviously, अगर आपने बेकार fund या फिर बेकार stock खरीदा है तो फिर obviously you should get out. But I think if you're investing in good companies, good mutual funds, good investments, which you think will grow over the 5 years and 5 to 10 years will do well, then it better not get out of it. Because that's when the compounding formula breaks. Yep. So I think that's investment में क्या है, वो Warren Buffett ने बोला ना कि rule number 1, never lose money. Rule number 2, never forget. That's very important. People don't realize, but that's when compounding breaks, and that's what you don't want to mess up. You don't want to mess with compounding formula by trying to over optimize, under optimize. You're trying to, बहुत सारे लोग करते हैं कि बुल मार्केट्स में ज़्यादा पैसा डालते हैं, बेयर मार्केट्स में निकालते हैं, या फिर बेयर मार्केट्स में ऐसा भी बंद करते हैं, बुल मार्केट्स में ऐसा भी इंक्रीज करते हैं. हमने देखा है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, नाउ ऑब्वियसली कंपाउंडिंग इज़ ग्रेट. रियलिटी में क्या हुआ है, हमने एक स्टडी किया है 2 साल पहले, वे वी लुक्ड एट एक्चुअल रिटर्न. इन्वेस्टर कितना पैसा बनाता है.
लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि इंडेक्स ने करीबन नाउ द इंडेक्स इज गॉन अप बट से 2 years बैक इंडेक्स इज अबाउट 12% CAGR which is good, अच्छा है, double of fixed income. Investors, just guess how much investors have made. Index is done 12%. How much have overall investors on average have made? Like all the retail investors you're talking about, or all investors combined in India? आई अज्यूम लाइक काफ़ी सारे लोग एक्सपर्ट नहीं भी हो गए, तो इंडेक्स अगर 12 किया है तो एटलीस्ट कितना 13, मतलब आप इक्विटी में ही बोल रहे हो ना? हाँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड, नॉट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स. स्टॉक्स में तो ध्यान दो, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कितना 14-15% करना चाहिए. कितना? So an average investor is about 6 to 7%. 6 to 7, lesser than the index also. Lesser than the index. हम सब बात कर रहे हैं active passive के बारे में, but the actual investor is actually losing money. Not losing, but they're making less money. They're making the same amount as what they would make in a fixed income product. My God. Why is this happening? ये हो रहा है not because of bad investments, because of bad psychology. हमने देखा है कि बुल मार्केट में फ्लोज, आपने देखा म्यूचुअल फंड फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है बुल मार्केट्स में. कोविड के बाद म्यूचुअल फंड फ्लोज बंद हो गए. People are doing all sorts of, then people are selling, they're switching from underperforming to outperforming mutual funds. They're trying to buy the highest performing mutual fund, which may not be highest performing in the future. So people are doing a lot of short termism. हमने देखा है कि आज के मार्केट में बहुत सारे इन्फ्लोज आ रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लोज आ रहे हैं, which is fine, but it should be consistent. आप बुरे मार्केट में, इनफैक्ट बुरे मार्केट में और आना चाहिए. दिस 12% कैन बिकम 20% इफ यू इन्वेस्ट इन लेस इन बुल मार्केट्स एंड मोर इन बेयर मार्केट्स, राइट? सो अब उल्टा आता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड फियर. बुल मार्केट में ग्रीड आती है, बेयर मार्केट में फियर आता है कि नहीं मेरा पैसा डूब जाएगा, क्यों इन्वेस्ट करूँ. बट दैट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट. सो रियलिटी एंड यूएस में भी सेम स्टडी दिया है. इट्स कॉल्ड डालबार स्टडी, यू कैन गूगल इट. बहुत अच्छा स्टडी है, जहाँ पे वहाँ पे तो 30 साल, आई थिंक they've done a study every year looking at the past 20 years. वहाँ पे दी S&P 500 इंडेक्स वहाँ यूएस में दिया है, लास्ट 20-25 सालों में दिया है 6% रिटर्न. एवरेज इन्वेस्टर ने कमाया है 2%. 2%. माय गॉड. एंड दिस गैप हमारे इंडस्ट्री में बोलते हैं बिहेवियर गैप. ओके, दिस इज बिहेवियर गैप बेसिकली. एंड दिस इज व्हाई आई फील, एंड द होल जॉब ऑफ एडवाइजर, आपका जो एडवाइजर है या फिर एक्सपर्ट है, द जॉब ऑफ एन एक्सपर्ट इज टू मिनिमाइज दिस एज मच एज पॉसिबल. बिहेवियर गैप क्या होता है? बिहेवियर गैप होता है कि आपका जो फंड का रिटर्न कितना है वर्सेस आपने कितना बनाया. हाँ. वो जो गैप है वो भी उसको बोलते हैं बिहेवियर गैप. एक्सेस म्यूचुअल फंड ने भी एक अच्छा स्टडी किया है इसके बारे में, हमने भी किया अच्छा स्टडी के बारे में. हमने ये डालबार स्टडी रेप्लिकेट किया इंडिया में. आपने देखा है कि 7-8%, आई थिंक 6.5-7% इज व्हाट इंडियन इन्वेस्टर्स हैव मेड इन द लास्ट, आई वुड से लास्ट 10 सालों में. हाँ, 10 या 15 सालों का मैंने स्टडी किया है. सो दिस इज, सो कोई बोल रहा ना, सो वेल्थ क्रिएशन इज इम्पॉर्टेंट, बट ये साइकोलॉजी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इसमें लाइक इंडियन इन्वेस्टर्स 6-7%, मतलब अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में भी अच्छा डाल देते हैं, तो कोई भी एक पैसिव फंड, इंडेक्स फंड में भी डाल देते हैं, निफ्टी ने 13-14% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया ओवर द लास्ट 40 इयर्स एटसेट्रा. 13-14%. हाँ, तो इसमें अगर डाल देते तो 13-14 मिल जाएगा. तो इंडियन इन्वेस्टर्स 6-7 पे क्यों अटके हुए हैं? क्या गलती क्या कर रहे हैं वो लोग? आई थिंक देयर, एज आई सेड ना, वो लोग बहुत जगलरी कर रहे हैं. सो वन इज ऑब्वियसली 6-7% इज ओवर मल्टीपल कैश फ्लोज ना. अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया 10 साल पहले, वो 1 लाख का वैल्यू होगा आज 13-14% निफ्टी में. प्रॉब्लम क्या है, लोग बुल मार्केट में लमसम डालते हैं, बेयर मार्केट में SIP कैंसिल कर देते हैं. बुल मार्केट में उनको वो फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है. वो बहुत सारे जो हाई कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर फंड्स, थीमेटिक फंड्स, उसमें डाल देते पैसा, और फिर बेयर मार्केट में बैलेंस एडवांस में डालते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, दिस इज द सिंगल बिगेस्ट रीजन टू व्हाई इन्वेस्टर्स डोंट मूव वेल और इन्वेस्टर्स डोंट मेक मनी. सो मेरे हिसाब से अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, अगर आप वॉरेन बफेट, चार्ली मंक के बारे में देखते हो, दे आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस. इनफैक्ट उनका फाइनेंस नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. उनका इन्वेस्टमेंट नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, बट फाइनेंस नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. बट दे आर नंबर 1 इन साइकोलॉजी. उनका साइकोलॉजी नॉलेज इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड. दे अंडरस्टैंड बायसेस. 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस के एकदम, मतलब द लोएस्ट पॉइंट इन द फाइनेंशियल क्राइसिस,
जहाँ पे full there was like absolute pessimism. There's only two guys who invested big time. एक तो था वॉरेन बफेट, दूसरा हावर्ड मार्क्स. ये दो ही थे, बाकी सब बेच रहे थे. They were buying potloads. Why? Because they understand. They know that उनको पता है कि when people are fearful, be greedy. When people are greedy, be fearful. So ये सब psychology and they can manage their emotions much better. उन्होंने 50 साल में बहुत सारे cycles देखे हैं. So I think investors need to really मतलब that ये जो behavioral I think that's something which you should invest in, which is why reading is very important. अगर आप देखते हो बहुत सारे जो बुक्स है, बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट, they don't really talk about कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक बेचना चाहिए. They talk about मिस्टर मार्केट कौन है, how do you deal with मिस्टर मार्केट, how do you react to situations, कौन से सिचुएशन में क्या करना चाहिए. तो बुक्स में क्या है, आप ये सब behavioral issues you get to learn, and that's what makes you a very good investor. Yeah, makes sense. So I think an average investor should understand उनके biases क्या है. सबको फास्ट करना है. आपने बात किया था अभी कंपाउंडिंग, ये पॉडकास्टिंग के बारे में, मिस्टर बीस के बारे में. लोगों क्या है, बहुत जल्दी है हमारे मार्केट में. फॉर एग्जांपल पॉडकास्टिंग में जो रोगन, ऑब्वियसली no one knows, but Joe Rogan did a decade of podcasting where we had no followers, 0 followers, बहुत कम, before he got to some place. Yeah. I think Beeple, the NFT artist, one of the most successful NFT artists in the world, he did 5,000 consecutive art pieces, one a day. 5,000 one a day. 5,000 how many? 10 years? More than 10 years. And uske baad he had this huge success. So a lot of people don't understand what goes into success, what goes into compound, that discipline, pig-headed discipline. Yeah. और स्टॉक मार्केट में यही प्रॉब्लम है, किसी को no one's bothered with compounding. उनको पैसा डबल करना है कल के कल. People are in a hurry, and because in a hurry you make 6%. If you are अगर आप compounding, your wealth creation should be product of compounding, not a product of selection. वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं ये म्यूचुअल फंड में खरीदूँ वर्सेस दिस आई विल गेट 10% मोर और इसके हिसाब से मेरा कंपाउंडिंग नहीं, और ये म्यूचुअल फंड का पास रिटर्न 40% है तो मुझे 40% मिलेगा फ्यूचर में. नहीं, ऐसा नहीं है ना बॉस. योर निफ्टी इज डन 12-13%. आपका एक्सपेक्टेशन वही आना चाहिए. लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि नहीं ये अगर बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं आज की तारीख में, जहाँ मैं बोलता हूँ उनको बोलते हैं कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है फंड का. मैं बोला निफ्टी इज अबाउट 12%, दिस फंड विल डू अबाउट 14-15%. वो दे बिकम शॉक्ड. दे लाइक नहीं, मैं तो 20% के नीचे दिखता ही नहीं हूँ. मैं बोला आपको कोई फंड मिलेगा नहीं आपको. बट क्या है, लोगों को क्या है, दे हैव दिस थिंग. एंड क्या अभी बुल मार्केट लास्ट 5 सालों में लोगों ने बहुत पैसा कमाया है. Everybody has done 25, 30, 35% CAGR. Most people I know, because markets have been one way trending. So लोगों ने cycles देखा नहीं है. So very hard for people to say that आपका past performance तो 35% है, but future में आपका 15% होगा. Like नहीं, ऐसा क्यों हो सकता है? But that's how compounding is. You have to, I mean, you're lucky to get into a cycle, but ultimately क्या होता है, हमारे जो stock market है उसका performance और earnings का performance same होना चाहिए. हमारा इंडिया का कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो हो रहा है 15-20%, एंड स्टॉक मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अर्निंग्स, और कुछ नहीं है. अगर इन्फोसिस का स्टॉक है, एंड वैल्यूएशंस आल्सो, सो इफ यू बाय अर्निंग्स एट हाई वैल्यूएशन योर रिटर्न्स विल बी लेस. अगर अर्निंग्स 15% है बट आपका वैल्यूएशन 50 PE है तो आपका रिटर्न होगा 5-10% ओवर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स. अगर आपका earnings है 15% but आपका PE is 5, then you will make 20-25%. This is a very very basic investing, but this is what it is. So you really have to keep expectations in order. अगर आप आज की तारीख में मार्केट में महंगा है मार्केट, तो people should expect to make less money over the next 2 to 3 years at least. But क्या ऐसा है नहीं. So and that's why this leads to this 6-7%, which is very upsetting. So hopefully by education we can stop people. I think people are looking at the stock market as a huge casino. It is a casino, but क्या है, casino में आप कभी पैसा नहीं बनाओगे. स्टॉक मार्केट में अगर आप 5 साल इन्वेस्ट करते हो तो आप पैसा बनाओगे. आपको सिर्फ आपके इमोशंस को थोड़ा अलग रहना है. यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड एंड यू हैव टू जस्ट
नॉट बी इन्वॉल्व. आप खुद Yeah. का आपका जॉब है या फिर आपका बिजनेस है वो आप रन करो एंड लेट द इन्वेस्टमेंट्स डू द थिंग. लेट कंपाउंडिंग मेक यू वेल्थ, नॉट ये स्टॉक खरीदो या फिर वो स्टॉक खरीदो. एंड मेरा क्या मानना है कि अगर आपको करना है तो आप करो, ना नहीं बोल रहा हूँ. नो, अगर आप मुझे 5 साल पूछते थे कि क्या मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए, मैं बोला मत करो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट करो. बट आज की तारीख में मैं बोलूँगा कि आप ट्रेडिंग करो. अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें से आप 90,000 म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में डालो, 10,000 में आप ट्रेडिंग करो. बिकॉज क्या है, मैंने सीखा है कि इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल अर्जेस. ह्यूमंस हैव अर्जेस. हमारे पास बहुत सारे स्पेकुलेटिव अर्ज है. इट्स एक्चुअली जेनेटिक. वी हैव स्पेकुलेटिव जेनेटिक मेकअप. हमारा जो बायोलॉजिकल मेकअप इज़ वेरी स्पेकुलेटिव, एंड दिस इज हाउ वी आर, स्पेशली इंडियंस. Because India was a very big trading hub, and trading is in our DNA and all of that. So हमारे पास ये पूरा ट्रेडिंग का पूरा ये है. तो मैं बोला करो आप, लेकिन आप 10% से करो, डोंट इनफैक्ट 5% का करो. और अगर आप सक्सेस हो तो यू कैन इंक्रीज इट. Most probably you'll probably lose money, 95%, 99%. So at least you're not harming compounding for 90%. At least 90% of your portfolio is growing at 12-15%, which is good. But 10%, if you have your urges, उसमें करो ना. Yeah. So I think and that advice is much better than saying नहीं आप कुछ मत करो, सिर्फ म्यूचुअल फंड में डाल दो, आप भूल जाओ. बहुत डिफिकल्ट है. Yeah, बहुत डिफिकल्ट है. I read this one very interesting quote that investing is 99% temperament and 1% intelligence. तो basically आपका जो temperament है, your emotions, EQ and all, that is more important versus your IQ which is there. Like, I don't know how true is that, but it's like emotions पे खेलना बहुत important है. No, I think I agree with you. Emotions are important. How do you manage emotions? By not looking at your portfolio. बहुत difficult होता है but वो करना, because पैसा अटका हुआ है ना. फिर every human being, as you said, की tendency तो होगा ही check करने का and all. So that becomes then difficult. Not every human being, but you can train yourself to not look at it. You can say that मेरा ये जो पैसा है वो मुझे 10 साल के लिए नहीं चाहिए. ये they should compound. आपको सोचना चाहिए कि आज से 10 साल बाद हमारे जो टॉप 50 कंपनियां इंडिया में, टॉप 50 कंपनीज, will they be bigger in 10 years time? If they are bigger in 10 years time, then money will grow. In the interim, anything can happen. कुछ भी हो सकता है कल, there should be a crisis, ये वो कुछ भी हो सकता है. But 10 साल में will the top 50 companies of India be bigger? And it can be any company. It doesn't have to be Reliance, TCS, Info. It can be new companies also. But do you think that the top 50 companies, whatever they are, can be bigger in 10 years than today? Then wealth will grow. किसी ने बोला है कि what creates unhappiness? Unhappiness happens when reality is different from what your expectations are. That leads to unhappiness. Yeah. So आपका expectation should not be 25-30%. क्योंकि अगर आप 15% कमाते हो, then you should be super happy. You should not be unhappy. Because guess what? Most investors are making much less than that. क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे जो wealth creators है, people lose money. They keep it quiet. They don't really tell people that they've lost money. हमारे stock market में most people trading में most people tend to lose money, but no one hears about it because कोई बोलता नहीं है. But you hear of success stories. It's like startups ना. Every one startup there are 1,000 failures. So I think the idea is obviously is to invest in all of that, but don't do things where you lose money if you're not an expert. If you're an expert, then you should. मैंने देखा है कि बहुत सारे जो full time investors है, so I am part of the investing community now for 10-15 साल हो गए. मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बेस्ट इन्वेस्टर्स है, स्टॉक इन्वेस्टर्स, नॉट म्यूचुअल फंड्स, उनका इट्स अ 24/7 जॉब. पार्ट टाइम में मैंने कभी देखा नहीं है. नो वन डज वेल इन पार्ट टाइम. आई हैव येट टू मीट वन सक्सेसफुल इन्वेस्टर हु डज थिंग्स पार्ट टाइम. नॉट वन. एवरी वन हु सक्सेसफुल, उनका फुल टाइम जॉब है. So I think it's very important to have if you are into investing, अगर आपको करना है तो आप full time करो and become good at it, and see how you can increase or how you can become better. And it requires a lot of work and effort. It requires 10-15 years of experience. You have to track the markets, all of that. But if it's a full time job, if you really want it, but don't expect it to work if it's not a full time job. So बहुत important है.
बट लेट्स से मान के चलते कि अगर 100% इक्विटी है, तो इसमें से आप क्या रेकमेंड करोगे फॉर अ यंग 24-25 ईयर ओल्ड गाय, कि कितना परसेंटेज स्टॉक्स में होना चाहिए, कितना परसेंटेज म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए, उसमें भी कितना परसेंटेज पैसिव फंड्स में होना चाहिए? कोई ऐसे रूल या कोई आप ऐसे फॉलो करते हो कि इतना नहीं, ऐसा परसेंटेज रूल होना नहीं है. चाहिए? आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट एज पर योर रिस्क एपेटाइट. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑल इन्वेस्टर्स टुडे, क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने रिस्क के बराबर इन्वेस्ट नहीं करते हैं. हमने देखा है कि द इन्वेस्टर्स who make this 7-8% or lose money, they invest more than they should invest in risky securities. बहुत सारे जो आज 23-24 they are overly risky. उनको स्मॉल कैप, माइक्रो कैप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना है, सेक्टर, थीमेटिक, बहुत सारे जो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स है, अदानी स्टॉक टाइप्स, दे वांट टू इन्वेस्ट देयर because they want to make quick money. So I think risk profile is the most important concept in even US में. अगर आप देखते हो, अगर मैं फंड परफॉर्मेंस दिखाता हूँ इन्वेस्टर्स को, मैं दिखाता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट ने दिया है 35% रिटर्न, तो पहले क्वेश्चन इन्वेस्टर का होगा कि अच्छा ठीक है, लेकिन आपने कितना रिस्क लिया है. यहाँ पे कोई पूछता नहीं है. सो आई थिंक रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने क्या और दूसरा देखा है कि लोगों का रिस्क एपेटाइट चेंज होता रहता है. बुल मार्केट में सबको मतलब एक्स्ट्रा रिस्क लेना है, और बेयर मार्केट में सबको कम रिस्क लेना है, विच इज़ ऑल्सो अगेन अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. आइडली इफ यूर अ स्मार्ट इन्वेस्टर यू डू दी ऑपोजिट. बुल मार्केट में आप कंजर्वेटिव रहोगे और बेयर मार्केट में आप अग्रेसिव रहोगे. लेकिन क्या है, कंजर्वेटिव होना मतलब FOMO, all of that. Whereas aggressive market in a bear market means you're taking too much risk. But that is the way to create wealth. So I think risk profile के मुताबिक आप invest करो. अगर आप normally 23-24 old are very aggressive, तो उसके हिसाब से you should allocate about 60-80% of your money in equities. मेरे हिसाब से अगर आपको stocks में interest है, अगर आपको full time, I'm assuming it's not a full time thing for you, so maybe you can allocate 5-10% to stocks because आपको सीखना है और आपको करना है, तो आप करिए, and the rest can be in equity mutual funds. और बैलेंस जो 20% है आपका, you should do it in some good fixed income mutual funds. So keep it very simple, don't complicate it. आपका जो equity portfolio है जो 60-80% है, उसमें से I would say put some of it in international, maybe around 10-15% minimum. Because क्या है, international really, it's not about returns, it's also about risk. The reason why we succeeded in selling international funds is not because we sold internationals as high return. हमने इनफैक्ट रिटर्न के बारे में बात ही नहीं किया. हमने बोला कि बस ये एसेट क्लास है जहाँ पे हमें देखा है कि अगर इंडिया बुरा करता है तो यूएस अच्छा करता है, एंड वाइस वर्सा. सो इट्स द ओनली एसेट क्लास वेयर योर इक्विटी रिटर्न्स विल बी एग्जैक्टली द सेम. जो आप इंडिया में बनाते हो, यूएस में बनाते हो, सेम है. अगर आप लास्ट 10 years देखते हो तो यूएस इज आउट परफॉर्म इंडिया. अगर लास्ट 20 साल देखते हो तो इंडिया इज आउट परफॉर्म यूएस. लास्ट 30 साल देखते हो then US is outperform India. So I think the beauty about international funds is that it balances your portfolio. Long-term returns will be the same as Indian equities, maybe a little bit less, but your risk is minimized. क्या होता है, there's a concept called asset allocation, जो मेरे हिसाब से is the best concept in portfolio management. Which says that if you're diversified across different asset classes, that is the best portfolio you could have. इसका मतलब क्या है, अगर आप आज 4 equity mutual fund खरीदते हो, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक से सेक्टर, जब मार्केट्स गिरता है then all of them will fall for sure. So your risk is not really minimized when you buy equity mutual funds, as opposed to if you put money some in gold, some in debt, some in international, some in Indian equity. अगर आप चार एसेट क्लास है, अगर और एक रीट भी है, अगर आप ये 4 या 5 एसेट क्लास में आपका मनी स्प्रेड करते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल, अगर कल इंडिया मार्केट गिरता है, यूएस तो स्टेबल ही है, तभी गोल्ड इज गोइंग अप, फिक्स्ड इनकम इज फ्लैट. सो योर Indian markets around 40%, you'll be down 5%, 10%. When international markets crash, जब Nasdaq टूटता है, which happens, your Indian markets will save you. So asset allocation मेरे हिसाब से बहुत ही important है. You should look at a portfolio from an asset allocation lens, not from a fund selection lens.
तो आप बोल रहे हो कि अभी 60-80% जो इक्विटी एलोकेशन है वो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में डाल दो आप, इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आपको स्टॉक्स करना है तो आप स्टॉक कर सकते हो. करेक्ट. बट और फॉर अग्रेसिव समवन इन्वेस्टर हु डजंट अंडरस्टैंड स्टॉक्स तो हाँ इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड ऑल वो बेस्ट म्यूचुअल फंड है. तो और उसमें भी क्या है, ज़्यादा म्यूचुअल फंड में मत करो. हमने देखा है कि बहुत सारे जो यंग इन्वेस्टर्स है वो ये डालते हैं 10, 15, 20, 25 म्यूचुअल फंड में. कितने करना चाहिए आइडियली, कितने स्कीम्स में डालना चाहिए? 5 से 6 मैक्सिमम. नहीं, इक्विटी में 3 से 4, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और बाकी बाकी हाइब्रिड सब या डेट? जो भी हाँ हाइब्रिड डेट जो भी करना है, इक्विटी में 3 से 4 मैक्सिमम. क्या होगा अगर आपके पास 6 म्यूचुअल फंड है एंड ऑल आर डिफरेंट, अगर आप सबका एडेड परफॉर्मेंस अगर आप सब मिलाओगे 6 म्यूचुअल फंड्स का, इफ यू एड द परफॉर्मेंस यू विल रिफ्लेक्ट द निफ्टी 50, निफ्टी 500. बिकॉज आउट ऑफ 6 2 विल डू वेल, 2 विल डू बैडली, 2 विल डू फ्लैट. तो सबको आप ऐड करोगे ना, एंड गेस व्हाट, देयर इज अ सेइंग कॉल्ड द मोर यू हैव द मोर यू हैव टू वरी अबाउट. इट्स अ मिनिमलिज्म सेइंग. करेक्ट. तो ज़्यादा मत करो, मैक्सिमम 7 to 8 म्यूचुअल फंड्स. हमारा इंडस्ट्री इज अनफॉर्चुनेटली ऑलवेज प्रोडक्ट सेलिंग, NFOs, IPOs, ये वो. बट इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, पार्टिसिपेट विद 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो. 90% you should just keep remain invested and not do much. So I think बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. सो अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो मैं जाता हूँ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है, एंड मुझे अभी कैसे समझेगा कि ये मिस सेलिंग हो रही है, या तो मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ? इंश्योरेंस में बहुत कॉमन है बाय द वे. तो इंश्योरेंस में इफ़ यू सी लाइक यूलिप्स आर बीइंग सोल्ड, मिस सोल्ड टू अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स बिकॉज उस पर कमीशन एजेंट को बहुत ज़्यादा मिलता है. एंड लाइफ इंश्योरेंस के जो पूरे प्रीमियम पे 35%, प्रीमियम का 35% कमीशन गोज टू द एजेंट. दैट्स व्हाई ऑल दीज एजेंट्स आर लाइक कि आप लो लाइफ इंश्योरेंस लो. ऐसा इधर भी होता है या नो? आई थिंक यहाँ पे ऑनेस्टली द कमीशन आर नॉट टू मच. इट्स वेरी standard, very the NFO commissions are slightly higher, but जो हमने न्यू फंड ऑफरिंग के बारे में बात किया था, वहाँ पे commissions are slightly but not too much. यहाँ पे क्या है, I think mis-selling is more about as I said, अगर आपके एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको पूछा नहीं हो कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो क्या नहीं, क्या आप कंफर्टेबल हो ड्रॉडाउंस का. क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर समझते कि आपको उनको लॉस नहीं हो सकता है. बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा मानना है कि SIP इज़ नॉट अ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. उनको लगता है SIP एक अलग ही एसेट क्लास है जहाँ पे उनका रिटर्न्स हाई है लेकिन कोई ड्रॉडाउन नहीं है. सो मैंने बहुत सालों को मिला है कि हाँ मैं तो SIP करता हूँ. मतलब आप इक्विटी फंड में करते हो? नहीं मैं SIP करता हूँ. दैट्स गुड. SIP इज़ द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्ट, बट आई थिंक यू शुड नो व्हाट यू इन्वेस्टिंग इन. आप अगर आपका आई थिंक ये है तो आपके रिस्क के मुताबिक आपको निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है स्मॉल कैप मिड कैप में, तो आप लार्ज कैप में आप करो, या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज में करो, जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी और डेट में दोनों इन्वेस्ट करते हैं. ये एक है. दूसरा है कि अगर आपके एडवाइजर्स आपको बहुत सारा एक्सपेक्टेशन वो मिस सेल कर रहा है परफॉर्मेंस का, कि आपका पोर्टफोलियो 30-35% तक कैसा ग्रो होगा, तो वो भी बहुत गलत बात है. बिकॉज दैट इज़ इम्पॉसिबल. मतलब मैंने अभी तक मिला नहीं हूँ किससे जिसने इतना रिटर्न दिया है. तो अगर आपका एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर आपको बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस दे रहा है तो वो गलत है. उससे आप बात ही मत करो. मेरे हिसाब से अगर मार्केट दे रहा है से 13-14%, एडवाइज़र जो 20% के ऊपर प्रॉमिस कर रहा है, वो भी डिफ़िकल्ट है. 20% बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर वो 20% के ऊपर प्रॉमिस कर रहा है या फिर बोल रहा है कि ये मैं आपको कर सकता हूँ, तो वो गलत है, वो मिस सेलिंग है. क्योंकि क्या होगा, वो आपको 25-30% के चक्कर में बहुत रिस्क लेगा. FNO में डालेगा पैसा, स्टॉक्स में डालेगा. सो ये प्रॉब्लम है. तीसरा है कि अगर कोई एडवाइज़र है जो आपको बहुत अग्रेसिवली FNO बेच रहा है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो आई थिंक जहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो, तो आपको नहीं करना चाहिए वो. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रिस्क स्टॉक्स ठीक है, बट म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट. अगर आप इन्वेस्टर्स हो जहाँ पे आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इक्विटीज़ का, तो आप आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स तक ही रहो. म्यूचुअल फंड्स के बाहर आपको देखना नहीं चाहिए मोस्टली. Yeah, that's super insightful, and got to learn a lot from you as well. One last question. Can I ask you one honest question? This is the last one.
So just what I also asked a lot of my friends that I'll be interviewing you. So what kind of questions to ask? Anytime do you feel a sense of pressure or some sort of tension or nervousness of continuing the legacy of the business? It's a very good question. I used to feel pressure in my early 20s. Not a lot of pressure, but good amount of pressure. I think, and I think that pressure was always like somewhere in my head. But honestly, I think I don't feel any pressure now, to be honest. I just wanna. I realized that this thing of filling shoes and all that is something which I think is not a very good attitude. It's not a very good philosophy. I have big shoes to fill. I have my own shoes. I'll do my own thing. The company is professional. There's not one founder; it's two founders, and I think the company will survive and thrive with or without me. The idea is that can I help? I think my objective right now in life is just to be useful. That's literally what it is. Be useful, have fun. Just feed your curiosity. And also ambition. If you ask my ambition, actually, I said I have no ambition, but actually I do. My ambition is to help more investors invest. Right now, I really feel that the way towards financial freedom we talked about in the first part of the podcast is to own stuff. Yeah. I'm trying to convince people to own stuff. Not. There's a lot of young people who are still able to own but not owning. So I think ownership is very important. Equity markets will give you the most if you're able to manage your psychology well, as I said. So I think my personal ambition is to really, increase number of investors in India, hopefully, and hopefully help them create wealth as well. So that's where I think where I come from. I think you're too modest and too humble as an individual. No, I honestly, I've been very misunderstood, to be honest. I don't think I'm humble. I don't buy expensive clothes because I just don't have the time or the inclination towards buying expensive clothes. I don't buy, I drive a very modest car, but that's literally because I like driving that car. I have an expensive car at home, but I like driving this car. So people think it's humble, but it's not. It's just a preference. You really want to take brands outside. After I've had a baby in the last 18 months, so I just end up doing things which I like. Not really. And I think you have to be outside that brand. And I think there's this concept called mimesis, which basically is one of the most important concepts today, actually, hamare hisab se, because the mimesis means that your actions are determined by what other people are doing as opposed to what you really want. You have babies because you see other people having babies around you. You go to a certain, 2008 everybody wanted investment banking jobs. Today they want jobs at Google or startups. So you are influenced by people around you, and you have to observe and really do what is good or authentic for yourself, where you think you can do well, not really follow the crowd. Even investing, right? If you just buy the mutual fund that everyone's buying, your returns will be average, because guess what? Everyone's doing that. So you will be average, right? So I think very important is to really find yourself, find what you like and find your own truth. Don't believe anyone. I don't believe anyone. I understand everything. I'm a very spiritual person. I've done everything. I've done Vipassana. I've done Isha Yoga. I've done like all the stuff. And the beauty is that, I'm taking like positives from each of these philosophies and cultures and spiritual stuff. So I think just find the truth, and that's how you should live, and be authentic. Find out what you really want as opposed to what is popular. Don't buy that shoe because it's popular. You really like it, go for it. So I think that's what's important, and that's why it's misunderstood. I'm just doing, like, I'm not trying to be modest. I'm just doing exactly what I like doing. Trying to be you yourself. Yeah, I'm just trying to be me. It's good, actually. And I think that's what's important. And also very lucky. Honestly, I've had a very lucky life. That's why being useful is important. Yeah. Because I feel like, so the pressure I have actually is to give back, and I think that is a good pressure. Not to deliver on work. That's fine. That pressure is more, that'll always be there. Work stress, work pressure will always be there. But yeah, giving back is very important. I feel like I'm in a very privileged position, and it makes sense, and I should do it, and I am. But I feel like I should do a lot more of it.
So that's the pressure, but that's a good pressure. Thank you so much for being very candid, very frank. I had an amazing time talking to you, and बहुत सारे लोगों को बहुत value मिली होगी. Thank you so much for doing this. I hope I could do justice to your time. Yeah, no, thanks a lot for having me, and look forward to more of this in the future. Yes, Thanks. thank you so much. I hope आपको value मिली होगी ये वीडियो से. अगर आपको थोड़ी सी भी value मिली होगी तो I request you to share this video with at least one friend you know, so that they also can get a lot of insights from this. And please let us know कि आपको कौन से पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आए, आपको कौन से पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए, एंड आपको कौन से टाइप के गेस्ट चाहिए, and what kind of questions you want us to ask all these guests, so that we give you the most possible value in the shortest amount of time. Thank you so much for watching this video. Do let us know in the comment section about the feedback for the same, and stay tuned for more episodes of Conversation with Kushal.